Hello students, in today's video we will discuss about atomic and molecular masses, mole concept and how to write the formula of the compound. So first we will focus on atomic mass. What do you mean by atomic mass? One atomic mass unit is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon. यहाँ पे हम बेस किसको लेते हैं? कार्बन को लेते हैं. किस एलिमेंट को लेते हैं? कार्बन को लेते हैं. सो 1 AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास को जनरली हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? उसका यूनिट क्या होता है? या तो AMU which stands for atomic mass unit, or you can go for only U, that is unit, is equal to 1.66056 into 10 to the power minus 24 gram. So it would be better you just write down mass of one. Suppose let's take one example. Suppose mass of an atom of hydrogen. हाइड्रोजन का मास जनरली कितना होता है? मीन्स द एग्जैक्ट मास इज 1.6736 into 10 to the power minus 24 gram, the exact mass of hydrogen. But if we will write this in the term of atomic mass, means in the term of AMU or U, then the mass of the hydrogen atom would be कितना होगा? Just as we know what is the value of 1 AMU, this mass, that is 1.66056 into 10 to the minus 24. then हमें निकालना क्या है? what is the mass of the, or what is the exact mass of the hydrogen atom in the form of AMU. तो हमें क्या करना है? सिंपली इसको डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करना है? मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन को किसके साथ डिवाइड करना है? विथ A1 AMU. then what will be our answer? 1.6736 into 10 to the power minus 24 ग्राम. ये क्या है? ये मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन है. इसको किसके साथ डिवाइड करना है? इसको हमें 1 AMU के साथ डिवाइड करना है. सो 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच? 1.66056 into 10 to the power minus 24 ग्राम. और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी कैन एबल टू गेट 1.0078 U. U क्या है? एटॉमिक मास का यूनिट है. सो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.0078 U, बट generally we are taking it as 1. Clear? Then come to average atomic mass. What do you mean by average atomic mass? Average atomic mass is defined as the average relative mass of an atom or of an element as compared with an atom of carbon 12. तो यहाँ पे भी हमारा बेस क्या है? कार्बन 12 है. So in both the cases, means in atomic mass as well as in average atomic mass, our base is always carbon. So let's take one example. So to understand the term average atomic mass. So what is our question? Our question is, boron occurs in nature in the form of two isotopes having atomic mass 10 and 11. What are the percentage abundance of two isotopes in a sample of boron having average atomic mass 10.8? सो यहाँ पे हमें क्या दिया गया क्वेश्चन को? फर्स्ट इट विल बी बेटर first go through the question carefully, then according to the question note down the data, then we will go for the calculation part. So just a minute. So according to the question, what is the data given? So let the percentage of boron 10, आज boron 10 का हमें डाटा नहीं दिया गया है. So let the percentage of boron 10 is equal to x. बिकॉज ये परसेंटेज में क्वेश्चन गिवन है. सो हमें पूरा मतलब परसेंटेज है, तो इसलिए हम कितना लेंगे? टोटल मास को 100 लेंगे. सो उसमें से मतलब आउट ऑफ 100 if boron 10, boron with isotope 10 is x, then what will be the percentage of boron with isotope 11? then obviously it will be 100 minus x. ये 100 minus x क्यों हुआ? बिकॉज टोटल हम कितना लिए थे? टोटल मास को 100. अगर 100 से तुम्हारा boron 10 x गया, then remaining कितना बचा? that is 100 minus x. Clear? then our next aim is to find out the average atomic mass. तो average atomic mass हम लोग कैसे निकालेंगे? फर्स्ट बोरन का कितना है? x है, और उसका आइसोटॉप कितना है? 10 है. सो कितना लिखेंगे? x into 10 प्लस ये फिर बोरन 11 का कितना है? 100 माइनस x इंटू कितना लिखेंगे? उसका आइसोटॉप कितना है? 11 डिवाइडेड बाई 100.
Okay, so but according to the question, the average atomic mass has already given. So what will be our equation? Our equation will be average atomic mass is equal to 10.8. so यहाँ पे हमने एवरेज एटॉमिक मास, हम यहाँ पे हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कितना आया था, x इंटू 10 प्लस 100 माइनस x इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, एंड 10.8 ये डाटा वी हैव, इट इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन. सो अभी क्या करना है, जस्ट ट्रांसपोज करना है, बस दैट्स इट. सो फर्स्ट हमें x इंटू 10 दैट इज 10x प्लस 11 into 100 that is 1100, then 11 into x that is minus 11x is equal to, यहाँ पे ये जो 100 यहाँ पे डिवाइड हुआ था तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. सो 10.8 into 100. तो फिर उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे हम लोग LHS RS को जैसे इक्वल करते हैं, जैसे ट्रांसपोज मेथड करते हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस देन आवर x इज इक्वल टू 20. सो दिस इज द आंसर. अच्छा देखो, अगर x हमारा 20 आया मीन्स इसका मतलब क्या है, जो बोरन विथ आइसोटोप 10 था उसका कितना आया 20. सो हमारा बोरन विथ आइसोटोप 11 हम उसको कितना लिए थे 100 माइनस एक्स. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोरन विथ आइसोटोप 11, दैट इज 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80. सो अभी बोरन का परसेंटेज विथ आइसोटोप 10 है 20%, देन बोरन विथ आइसोटोप 11 उसका परसेंटेज है कितना 80%. Hope it will easy for you. The next is one NB means the notebook is there. Mass of one atom of oxygen is equal to 2.66 into 10 to the power minus 23 gram. ये जो लिखा है ना, जो एग्जैक्ट जो वैल्यू जो लिखा है 2.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, ये है मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन. बट इफ यू विल कम टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन देन इट विल बी 16 ग्राम. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द मास ऑफ one atom of oxygen or any element and gram atomic mass. If here I am taking the example of oxygen, but don't confuse between these two terms, means mass of one element and gram atomic mass of another element. So next is, just hold on, I am turning the paper only, just hold on. The next term is molecular mass. What do you mean by molecular mass? It is the sum of atomic masses of the element present in a molecule. So let's take one example. So we will take at CH4. So here CH4 means यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है, H कितना है 4 है. So what will be the answer? 1 into atomic mass of C plus 4 into atomic mass of H. Then what will be the answer? 1 into कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 प्लस 4 into atomic mass of हाइड्रोजन कितना है 1. Actually the exact value of atomic mass of H is 1.008 U, but generally we are taking it as 1. So just like this, the exact value of atomic mass of carbon is 12.011 U, but generally we are taking it as 12. So just according to this, what will be the answer? If you will take the exact value means if you will take the exact value means 12.011 U, and in case of hydrogen it will be 1.008 U, then the answer will be 16.043 U. But if you will take the general value means 1 into atomic mass of carbon कितना है 12 plus 4 into atomic mass of H कितना है 1, then what will be our answer? 12 plus 4 is equal to 16. Both the answers are correct. This one is also correct and this one is also correct. But whenever you are writing the answer, don't forget to give the unit. Then our next question is, which is also based on the molecular mass. Our next question is, calculate the molecular mass of glucose. And glucose का formula क्या है? What is the formula of glucose? The formula of glucose is C6H12 and O6. So हमें इसका solution कैसे निकालना होगा? C हमारे पास कितना है 6, H कितना है 12 and O कितना है 6 है. So then 6 into
कार्बन का मास कितना है 12 प्लस the exact value is 12.011 u but generally we are taking it as 12 then plus H हमारे पास कितना है 12 है so 12 into हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 6 into ऑक्सीजन का कितना है मास 16 so what will be the answer 72 plus 12 plus 96 ठीक है so ये so what will be the answer is 180 u okay so then come to ये तो गया हमारा molecular mass then another question is there which is formula mass of ionic compound मतलब क्या है which dissociate into respective cation and respective anion. Suppose here I am taking NaCl. So if we will dissociate NaCl, then it converts to Na plus and Cl minus. Got my point? So our next aim is to find out the formula mass of the ionic compound. So what is the formula of ionic compound or what is the question? The question is to find out the formula mass of NaCl. Then what we have to do? The formula is the formula for find out formula mass is sorry for the bad throat. So what is the formula mass of NaCl? Then if we will dissociate NaCl, then it will convert to Na plus and Cl minus. So what is the number of charge of cation? That is 1 and also for anion it will be also 1. So how can we find out the formula mass of ionic compound? Then our formula is number of cation into atomic mass of cation plus number of anion into its atomic mass. So here how many cation is there? One cation is there, that is Na plus only. So 1 into Na का mass कितना है 23 then plus number of anion is how much 1. Then what is the mass of the anion? That is 35.5 is equal to 58.5 u. And repeatedly I am telling, don't forget to write the unit. So this is all about your molecular mass, and in the next video we will discuss about mole concept and molar masses and also the empirical formula, how to write down the empirical formula. And before going to mole concept, don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.